Good morning, children. We have successfully completed the revision work of our syllabus prescribed for UT third, and in this reference, we have successfully revised the summary question answers of our previous two chapters, Reach for the Top and The Point of Love. Now, today I am present here with the revision of last chapter from moments, and this chapter has been prescribed as in the form of the third chapter of your UT third syllabus. This is a very interesting story of William Sidney Potter, and his pen name is O. Henry. It is also his pseudonym O. Henry. But the real name of this writer is William Sidney Potter, and he was a famous American short story writer and novelist. This is a very interesting story, and in your offline classes, I have already explained you. But this is the story about the mentally condition, about the negative thinking of a girl. That's why your parents, your teachers, and all your elders always suggest you that you should be we should always live with a positive attitude in our life. That's why negative thinking is always takes us in the negative depth. That's why here O. Henry has very successfully painted the picture of a girl who is psychological ill, and such a feelings she lived her life, and in this way, first students, I will introduce you with the life history of the writer. O. Henry was born in 1862 and he died in 1910. He was an American short story writer, and his real name was William Sidney Potter. And his literary name, his pseudonym was O. Henry. He raised in Greensboro, North Carolina. Henry's rich canon of work reflect his wide range of experience and his distinctive for its witticism, clever wordplay, and unexpected plot twisting endings. His stories expressing the effect of coincidence on character through humor, grim or ironic, and his warm characterization of the awkward and identified with the name. He is also famous for the difficult situation in the character were some of the devices that became identified with his name. Now, students, he wrote nearly 600 stories
about life in America. Present story, The Last Leaf, includes a young artist who is inspired to live by the kindness of an old artist. The key theme of the touching story is the power of art in human life. The story is also inspire us that if there is no humanity in our heart, in our acts, then really we are not a human being. It is a spectacular story woven with the themes of hope, friendship, selfishness, and sacrifice. The story will also inspire us to do the sacrifice and selfishness, the act of sacrifice and selfishness in our life. This is the story. Now I am going to tell you the introduction of the story. The Last Leaf is considered one of the best stories of O. Henry. ओ हेनरी की बहुत ही जो फेमस स्टोरीज हैं उनमें से एक है ये द लास्ट लीफ. It depicts that no cure completely. It depicts that no cure completely. A patient must have a positive outlook. If you are a patient, then you have the positive outlook. If a patient is pessimistic, if the feelings of pessimistic feelings come in the heart, in the mind of a patient, he or she cannot hope to get well in spite of the best medicines and best efforts of the doctor. अगर आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग आ गई तो कोई भी डॉक्टर कितनी भी अच्छी आपको दवाइयाँ दे दे तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे. जॉन्सी, अ यंग आर्टिस्ट, सफर्ड फ्रॉम निमोनिया. जॉन्सी को निमोनिया हो जाता है. शी बिलीव्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट आईवी लीफ फेल. उसे ये विश्वास हो जाता है, उसके खिड़की के सामने, विंडो के सामने एक आईवी क्रीपर थी. वो कहती है इट वाज द सीजन ऑफ ऑटम, और ऑटम सीजन में, पतझड़ के सीजन में पत्तियां गिरती हैं. तो उसने ये विश्वास बना लिया था कि जो उसके विंडो के सामने जो आईवी क्रीपर है, जो वेल है, उसका अगर उसकी जब तक लास्ट पत्ती उसकी गिर जाएगी तो उसके साथ ही जो है उसकी डेथ भी हो जाएगी. बट व्हेन द लास्ट लीफ डिड नॉट फॉल, बट व्हेन एट लास्ट द लास्ट लीफ डिड नॉट फॉल, जॉन्सी रिगेंड हर विल टू लिव. तो उसने देखा पत्ती नहीं गिर रही है तो उसकी जो जीने की जो प्रेरणा थी, जो विल पावर थी, उसके अंदर जाग गई. बैरमन, एन ओल्ड पेंटर, इट इज ऑल्सो द मेन कैरेक्टर, ही इज ऑल्सो द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी. एन ओल्ड पेंटर had painted the last leaf so well it looked to be real. उस बैरमन ने उस पत्ती को ऐसे पेंट कर दिया था कि वो जॉन्सी को बिल्कुल रियल दिखाई देती थी. दिस इज होल द इंट्रोडक्शन ऑफ द योर स्टोरी. नाउ हियर आई एम गोइंग टू टेल यू द समरी ऑफ दिस स्टोरी. सू एंड जॉन्सी, two young artists. You know very well, Sue and Jauncey were two young artists, shared a small flat which was on the third story of an old house. जो एक पुराना घर था उसकी थर्ड स्टोरी पे, तीसरी मंजिल पे एक फ्लैट में दोनों रहती हैं. Once Jauncey fell seriously ill. एक बार क्या होता है, नवंबर का महीना था, सर्दी का टाइम था, जॉन्सी जो है बहुत ही सीरियसली बीमार हो जाती है. And here was the problem with this girl. उसके साथ यही प्रॉब्लम थी. She became seriously ill and she was suffering from pneumonia. जॉन्सी को क्या होता है, निमोनिया हो जाती है. And it was the difficult situation before the girls. अब गर्ल्स के सामने ये डिफिकल्ट सिचुएशन थी. It was the month of November. She was suffering from pneumonia. जब जॉन्सी को निमोनिया हो गई, her condition was continuously deteriorating despite the best efforts of the doctor to cure her. Doctor was doing his best efforts. डॉक्टर अपने अच्छे एफर्ट्स कर रहा था, लेकिन उसकी कंडीशन जो थी वो
और ख़राब होती जा रही थी। सी हैड ग्रॉन एक्सट्रीमली वीक, वे बहुत कमज़ोर हो गई थी। मोर एवर सी हैड लॉस्ट हर विल टू लिव, एट लास्ट सी हैज लॉस्ट हिज विल पावर टू लिव। उसने अब जो है जीने की इच्छा छोड़ दी थी। शी वॉज कंप्लीटली नेगेटिव दैट डॉक्टर कांट सेव हर, कि अब डॉक्टर जो है उसे नहीं बचा पाएगा। जॉन्सी फेल्ट दैट सी वुड डाई सून, जॉन्सी को ये लग रहा था कि वो जल्दी ही वह मर जाएगी। ऑन द ब्रिक वॉल, जो उसकी दीवार थी ईंटों की बनी हुई, ऑफ द अपोजिट हाउस, जो उसके पीछे जो घर था, देयर वॉज एन ओल्ड आईवी क्रीपर, उसके पास जो है एक क्रीपर थी, एक बेल थी। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंडी और तेज हवा चल रही थी। इट वॉज शेडिंग इट्स लीव, और उस जो बेल थी, जो क्रीपर थी, उससे जो उसकी पत्तियां जो है गिर रही थी। समहाउ ए फैंसीफुल आइडिया इंटर्ड इन जॉन्सीज हेड, पता नहीं कैसे एक इमेजिनेटिव आइडिया जॉन्सी के माइंड में आया। एंड सी हैज स्टार्टेड टू थिंक इन द नेगेटिव मोड, अब वो जो है नेगेटिव मोड में उसने सोचना शुरू कर दिया। एंड इट वॉज द प्रॉब्लम बिफोर जॉन्सी, अब जॉन्सी के सामने देयर वॉज अ नेगेटिव थिंकिंग इन द माइंड ऑफ जॉन्सी दैट विद द falling of the last leaf of the ivy creeper, her life will also be over, उसकी लाइफ जो है वो भी खत्म हो जाएगी। इट वॉज द नेगेटिव थिंकिंग इन द माइंड ऑफ जॉन्सी, जॉन्सी के माइंड में ये नेगेटिव थिंकिंग घर कर गई थी कि उसकी when the last leaf will fall and she will also die with the falling of the last leaf of this ivy creeper, उसने भी सोच लिया कि जो आईवी क्रीपर है उसके गिरते ही उसकी लाइफ जो है वो भी खत्म हो जाएगी। दैट शी वुड डाई विद द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ ऑफ द क्रीपर। दिस आइडिया बिकेम डीप रूटेड इन हर माइंड, एंड दिस नेगेटिव थिंकिंग रूटेड डीपली इन द माइंड ऑफ जॉन्सी, जॉन्सी के माइंड में ये नेगेटिव आइडिया आ गया। नाउ व्हाट वी शिल डू? So that was the condition with the negative thinking, his condition was going worse, उसकी कंडीशन खराब होती जा रही थी। The doctor declared that no medicine could work unless Jauncey had the will to live. Doctor had declared that if Jauncey has the negative will and she will not the positive attitude towards life, अगर उसकी लाइफ के प्रति अगर उसका नेगेटिव रवैया ऐसा ही रहा तो नो मेडिसिन कैन क्योर हर, तो कोई भी दवाई जो है उसको बचा नहीं पाएगी। ही सेड दैट हर एलमेंट वाज मोर साइकोलॉजिकल देन फिजिकल, कि उसकी जो दवाई है सबसे पहले उसकी मेंटली जो कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। एंड विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग इन हर माइंड nobody can save her, कोई उसे बचा नहीं पाएगा। एंड इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर एनी डॉक्टर टू क्योर सच अ नेगेटिव एटीट्यूड पर्सन। एंड द डॉक्टर इन्फॉर्म हर फ्रेंड शू हर फ्रेंड वॉज डीपली वरीड अबाउट जॉन्सीज कंडीशन। अब जॉन्सी की कंडीशन के विषय में उसकी जो फ्रेंड थी, उसकी जो दोस्त थी, सहेली थी, शू को बहुत टेंशन होती है। She could not think of living without Jauncey, and she has never imagined in her life that she can live without Jauncey, कि वो जॉन्सी के बिना भी जीवित रह सकती है। उसने कभी सोचा नहीं था, she has never imagined in her life that if she could live without Jauncey, कि जॉन्सी के बिना भी उसे जीना पड़ेगा। So she tried every possible thing to comfort her. So Sue tried her best to develop the positive attitude towards life in the mind of Jauncey. Sue ने अपना बेस्ट दिया that she can change the outlook of Jauncey towards life, कि लाइफ के प्रति वो शू का जो है वो एटीट्यूड बदल सके। She told Jauncey that there could possibly be no relation between an ivy leaf and the life of a person. उसने जॉन्सी को विश्वास दिलाया
कि जो आईवी क्रीपर है उसकी लास्ट लीव का किसी भी देयर इज नो कनेक्शन विद द लाइफ ऑफ अनदर पर्सन, उसका किसी भी पर्सन से कोई कनेक्शन नहीं है. बट जॉन्सी डिड नॉट But Johnsy did not listen to her friend. But Johnsy did not pay attention towards her friend. She did not pay any attention towards her friend Shu. The foolish idea had possessed her too strongly. And this foolish idea, that what was the idea? The idea was that she will die with the falling of the last leaf of the ivy creeper. This foolish idea possessed her too strongly, and this idea, this negative thinking possessed in her mind, in her heart completely. She had started believing firmly that she would die with the fall of the last leaf. And she was firmly believed, it was firm thinking in her mind that she would die with the fall of the last leaf. जैसे ही जो आईवी क्रीपर की अंतिम पत्ती जो है, लास्ट लीफ जो है वो गिरेगी, उसके साथ जो है वो भी खत्म हो जाएगी. बट अनफॉर्चुनेटली soon only one leaf remained on the ivy. And at last, it was the difficult situation before two friends. At last, only the one leaf was left on the ivy creeper. It was raining heavily, and icy wind was blowing. बहुत तेज बारिश हो रही थी और बर्फ की ठंडी हवाएं चल रही थी. Blowing, and it seemed the last leaf would fall any moment. And it was seeming that the last leaf of the ivy creeper will fall in any moment. किसी भी क्षण जो है वो गिर सकती है. And that was the negative thinking in the mind of Johnsy, that with the falling of this last leaf, this last leaf of the ivy creeper, she will also die. Now, because I have told you that the Sue was worried about the health of her friend, so for this she decided to take the help of another old painter. And here is the entry in the story: the old painter Behrman. Meanwhile, Behrman was a 60-year-old painter. 60 साल का बूढ़ा पेंटर था, who lived on the ground floor of the same building. Behrman जो है उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे रहता था. His lifelong dream was to paint a masterpiece that had remained a dream only. And it was the dream, उसकी lifelong एक ड्रीम था. there was a dream in his mind that he want to paint a lifelong picture. वो एक masterpiece पेंट करना चाहता था, remained a dream only. Sue told Behrman about Johnsy's fancy. Now Sue she visited to Behrman's house, and she told about the negative thinking of Johnsy, that she would die with the fall of the last leaf. There was a negative thinking in her mind that she will die with the fall of the last leaf of the ivy creeper. Then Sue come back to her room. तुरंत शू जो है अपने रूम में वापस आती है. She asked Johnsy to keep her eyes closed until she had finished her painting. Sue came back. She prepared a plan with Behrman, and when she returned to her room, and she asked Johnsy to keep her eyes closed until she had finished her painting. उसने कहा मैं एक पेंटिंग बनाना चाहती हूँ और उसी के लिए, और तब तक तुम जो है अपनी जो आईज हैं, अपनी आँखें जो हैं वो उसी की तरफ रखना जब तक मैं पेंटिंग फिनिश करती हूँ. It was an urgent job, and it was very urgent, that had to be finished that very evening. And she told Johnsy that it is very urgent and she want to finish it by the evening that day. Actually, it was a trick.
As I told you that it was a trick that soon Johnsy fell asleep. It was a trick that she had believed that Johnsy will sleep very soon. It was the time of next morning. Johnsy looked out of the window. ये सुबह की बात है. जॉन्सी जो है वो खिड़की से बाहर देखती है. She was relieved to see that the ivy leaf was still there. And there was relief. She felt a relief in her heart, in her mind, that the last leaf of the ivy creeper was still there. Seeing the last healthy and strong even after the storm. रात के तूफान के बाद, after the night storm, the last leaf was also there, and it was safe and healthy in the creeper. She regained her will to live. Now she gained her will to live. She realized that it was a sin to want to die. मरने की चाह करना भी एक sin, ऐसा ही sin माने पाप होता है, एक पाप है. This life is a God gift. ये भगवान का दिया उपहार है, and we have to live our life with a smiling in our face. The doctor declared that she would recover soon as she had regained her will to live. Now the doctor has also declared that she will recover very soon. अगर उसके अंदर जीने के प्रति इच्छा जाग गई, she will recover very soon from her illness. The doctor has declared this fact. डॉक्टर ने ये फैक्ट जो डिक्लेयर कर दिया that she will recover very soon from her illness because she has regained the willpower to live. Later, she told Johnsy that the leaf on the wall was only a painting. At last, when Johnsy started recovery from her illness, and at last she told him that it was only a painting. It was made by Behrman during the cold wintry night. उस ठंडी रात में वो बेरमन ने वो पेंटिंग बनाई थी. It was his masterpiece. ये उसका masterpiece है, and it represents hope. And this masterpiece also represented hope in human life. She also informed Johnsy that Behrman had died of pneumonia. She also informed Johnsy that Behrman has died due to pneumonia. बेरमन को उस ठंडी रात में निमोनिया हो गई और वो मर गया. बिकॉज ही वॉज आउट इन द वेट एंड कोल्ड नाइट पेंटिंग द लास्ट लीफ. वो अंतिम पत्ती जो है उसको वह पेंट करते समय he got pneumonia, she got cold and fever, and at last he died with pneumonia. He had painted in the night the original last leaf fail. और उसने जॉन्सी को ये भी बताया कि जो तुम्हारी थिंकिंग में जो लास्ट लीफ थी वो तो बहुत जल्दी गिर गई थी, वो तो उसी रात में गिर गई, बट इट वाज बेरमन हु पेंटेड द लास्ट लीफ. ये बेरमन था जिसने कि वो बनाई. ही पेंटेड अ पिक्चर ऑफ द लीफ ऑन द वॉल, एंड विद द सैक्रिफाइस ऑफ on the behalf of his life, he saved the life of a young painter, Johnsy, and with this positive thinking, he has also developed the positive thinking of towards life in the mind of Johnsy. And in other way, you can say that on the behalf of his life, he saved the life of Johnsy. So student, here the summary, I have completely explained you the summary of this chapter, and now there are some word meanings and 4 questions I will also send you today, and these questions are: first question is, what is Johnsy's illness? What can cure her? The medicine और द विलिंगनेस ऑफ लाइफ. जॉन्सी की बीमारी क्या थी? कौन सी चीज़ उसका इलाज कर सकती थी? दवाई या द विलिंगनेस ऑफ लाइफ,
और लाइफ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो उसका इलाज कर सकती थी? दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैड इज कॉमन अमंग टीनेजर्स? डू यू थिंक द फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन, जो डिप्रेशन था जॉन्सी के मन में, इट इज कॉमन, हैज इज कॉमन एमंग टीनेजर्स, जो टीनेजर्स हैं, जो यंग हैं, उनमें ये जो डिप्रेशन की जो फीलिंग्स हैं वो क्या कॉमन है? अकॉर्डिंग टू यू, इज दिस द कॉमन थिंग्स एमंग द यंग मेंस इवन टुडे? दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन. एंड द थर्ड वन इज, बैरमन हैज़ अ ड्रीम, बैरमन का एक सपना था. व्हाट इज इट? वो कौन सा सपना था बैरमन का? डज इट कम ट्रू? एंड डज द ड्रीम ऑफ बैरमन कम ट्रू एट लास्ट? एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट इज बैरमन्स मास्टरपीस? जो बैरमन वाज द ओल्ड पेंटर एंड व्हाट वाज हिज मास्टरपीस, उसका जो मास्टरपीस है वो क्या था? व्हाट मैक्स स्यू सू से सो, सू ने उसको, उसकी जो लास्ट पेंटिंग थी, वो लास्ट लीव की उसने जो पेंटिंग बनाई थी, वाई शू कॉल्ड इट द मास्टरपीस ऑफ बैरमन? शू ने उसको बैरमन का मास्टरपीस क्यों कहा? वाई शू कॉल्ड इट द मास्टरपीस ऑफ बैरमन? Here student, completely we have completed the whole syllabus of UT third with the poem of the all the literary work we have completed here, and your examination will take place on the 4th Feb. 4 फरवरी को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा. एंड completely I am hopeful that you will appear in your examination offline. हो सकता है, आई थिंक पॉसिबिलिटीज़ यही हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन हो. ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. एंड ऑन द अदर वे, आई विल ऑल्सो सेंड यू some questions as homework, and you have to write the answer of these questions yourself, and the solution picture of these two questions you will send me by the evening tomorrow. कल आपको शाम से पहले मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर लिखकर और उनका आंसर की जो पिक है, जो फ़ोटो है, वो मेरे पर्सनल नंबर पे आपको व्हाट्सएप करनी है. योर अटेंडेंस विल बी बेस्ड ऑन दिस फैक्ट. आपकी जो अटेंडेंस होगी वो इसी पर बेस्ड होगी. ओके स्टूडेंट्स, एंड we have also completed the grammar part. Surely you will find active, passive, direct, indirect, tense and jumble words in the grammar portion. And surely we have, in our offline classes, we have completed the grammar section also. And I am hopeful that very successfully you will appear in your exam, and you will gain good marks in your UT third examination. Best of luck for your exam. Okay students, goodbye.